Shweta, you were absent in class. Why? Were you online? नहीं. And you were absent though. Why? कौन कौन नहीं था रिकॉर्डेड में भी? क्यों नहीं थे? रिकॉर्डेड में भी नहीं थे. क्यों? एक ही क्लास है, एथिक्स की तो है. रीजन पूछा मैंने. चलो. So I told you to write something about Jainism. Aditya. Jainism. Anikant and Syadvad, I gave you the homework. From the last two classes, I'm telling you to read about it. Like we judging something from when we said about some truth about something, Nikant was said that it has more complex and many aspects. Okay. Whereas Sharma said that we are judging from only one point of view, and it has also vast point of views. When we are judging something, we just saw from our point of view and only one opinion. But according to the condition that the person is going through, it's the reality according to him. Syadvad? Sharma said that when we judging something, we judge according to our point of view only.
but every truth has many aspects, and we can't summarize at a time at all. ओके, और कौन बताएगा? किसने पढ़ा इसके बारे में? पंकज, you were in the class, right? Did you read about Jainism? What is Syadvad? It says that it cannot be absolute. It cannot be absolute. Truth can be not absolute. Can you give me an example? Example, I wrote implementation of Bagh in that scenario. This for AQI control, predict response action plan. So, there are sevenfold predictions of Sharpa. Sharpasti, it means we have set controls the increase of AQI. And Sharpnasti. Yes, there is Syadasti, Syadnasti, and then Chasti. There are like lots of forms of it जो हम बात करेंगे. ठीक है. किसी ने नहीं पढ़ा इसके बारे में. So अनेकांतवाद is basically it's a like complex and has many sides. This word also says अनेक. ठीक है, many sides of the reality. As who gave the example of elephant? जिसने कहानी सुनाई थी? हाँ. जिसने कहानी सुनाई थी that there was like 4 people, right? And they were told to touch the elephant. ठीक है, कोई अगर पैर को हाथ लगा रहा था तो they were telling कि ये पिलर की तरह है, right? And if someone was touching tail तो वो बोल रहे थे कि ये rope की तरह है. If they are touching ear तो they were saying that elephant is like a fan, right? So everyone had different perspective, but the reality according to them was true. ठीक है, so we should not question that. This is what Anekantvad says. In the world, in today's scenarios where diversification is so much, diversity is so much, so many communities, so many religions. So this is how we should live, right? With anek, right? Anek perspectives, right? Understood? When it comes to Syadvad, Syadvad comes from Syat. Syat means many sides and many perspective, many conditions. ठीक है. So जब हम Syadvad की बात करते हैं तो basically it says that true, that statement is true in some respect, right? Syad is like in some respect it is true. The keyword is in some respect. ठीक है. So please write down the definition of Anekantvad first. Yes, it teaches tolerance. Is tolerance something negative or positive? What is the situation when it can be negative? What's the definition of tolerance? To have patience. To hold it in a condition or in a situation where different viewpoints or different people are having viewpoints or are there. So tolerance is understanding other perspective also, and with that perspective you are living with your perspective also. So there is like a combination. So tolerance is not nothing, like it's not negative thing. Okay, if you are tolerating something, then it's something that you are understanding their viewpoint also. This is why it is related to Anekantvad. Okay, if we made it, but tolerance is never negative until and unless we are not coming with that definition. Tolerance is something very beautiful and positive aspect. It becomes negative when we are not able to analyze and the condition is not going through our analysis. Then it becomes negative. Yes. Anekantvad. Okay, now write down Anekantvad. अगर कहीं पे लड़ाई हो रही है between Hindu and Muslim and Muslim ने मार दिया किसी को उठाकर and वो tolerate कर रहा है वो मार खाना tolerate कर रहा है without any reason that goes into negative tolerance, right? क्यों tolerate करेगा? हाँ, मैं वही बोला ना, जब तक हमारी कंडीशंस मीट हो रही है टॉलरेंस इज ब्यूटीफुल. ठीक है, नहीं कंडीशंस मीट होती है देन इट बिकम्स नेगेटिव. राइट डाउन अनेकांतवाद. Reality is complex and has many sides. Reality is complex and has many sides. No single statement can capture the whole truth. No single statement can capture the whole truth.
No single statement can capture. No single statement can capture the whole truth. ये आगे की सीट खाली है. अच्छा, these are your bags. Every viewpoint express only a part of reality. Only a part of reality. Write an example: elephant and the blind man. Elephant and the blind man. Do I have to dictate the example, or you can form it yourself? Good. Good. So it's like understanding that each person has like one aspect, but when we understand it together, so then we understand and then we have the fuller picture. ठीक है? So this is अनेकांतवाद. समझ में आया? Now write next सियादवाद. हाँ. जो कुछ रिपीट करना है तो प्लीज टेल मी. ठीक है? लास्ट पॉइंट आपने समझाया एग्जाम्पल के बाद वो एक बार फिर से कौन सा पॉइंट? जिसमें आप बोल रहे थे कि एक-एक करके जोड़ो तो सारे मैं बेसिकली बोल रही हूँ कि हर पर्सन का एक एक एस्पेक्ट होता है. ठीक है? तुम्हारा अलग एस्पेक्ट है, मेरा अलग एस्पेक्ट है, बट अगर हम कंबाइन करेंगे उससे तो देन वील हैव द फुलर पिक्चर. राइट डाउन सियादवाद. सियादवाद comes from Syat. Syadvad comes from Syat. Certain perspective. In front of it, write down from a certain perspective. Every statement is true in some respect. Every statement is true. Every statement is true in some respect and not true in another. Every statement is true in some respect and not true in another. Although ये 7 conditions जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए याद करना, but still just to have the knowledge, I am making you write it. So please लिख लो 7 conditional statements. 7 conditional statement. First is स्यात् अस्ति. स्यात् अस्ति. In bracket write down in some sense it exists. In bracket write down in some sense it exists. Why were you absent? See the recorded classes. So Syada sees that in some sense it exists. So if we are like seeing the glass of water, right? It is half empty and half filled, right? तो आधा हम या तो उसको भरा हुआ देख सकते हैं, that depends on our perspective. या तो हम उसको आधा भरा हुआ देखें या फिर उसको आधा खाली देखें, right? So Syadasti is that in some sense it is existing, that water is existing. ठीक है? Next, Syad Nasti. Syad Nasti, write down in bracket, in some sense it does not exist. In some sense it does not exist. अब उसी ग्लास के पानी को अगर हम देखते हैं तो हम आधा ग्लास हमें खाली मिलता है, आधा भरा हुआ मिलता है, राइट? सो दैट सेकंड कंडीशन विल बी कि वो आधा खाली है, राइट? नेक्स्ट, स्यादस्ति च नाश्ति च. स्यादस्ति च नास्ति च, इट्स CA. CA. It's a Sanskrit. We are reading Genesis. हाँ जी.
In bracket write down in some sense, comma, it both exists and does not. In some sense it both exists and does not. उसी ग्लास के पानी को वो एग्जिस्ट भी करता है और वो नहीं भी एग्जिस्ट करता, ठीक है. देन सियत अवक्तव्य. हाँ में ASTI होगा. हाँ. सियत अवक्तव्य in bracket write down in some sense it is indescribable. अवक्तव्य is when you cannot describe it, ठीक है. In some sense. In some sense it is indescribable. So now imagine that there are some changes, like millions of changes, right? And you cannot describe it properly, right? So this is indescribable to you, something which is not describable, ठीक है. Next, स्यात् अस्ति वक्तव्य. स्यात् अस्ति अवक्तव्य. इसमें सिर्फ अस्ति डाल दो बीच में. This will be fifth one. स्यात् अस्ति अवक्तव्य. In bracket write down partially describable, partially indescribable. Describable, partially indescribable. So if we see that glass of water, it has, like, from one angle it has water, right? And if we'll have this deep analysis, so it is like ever changing, ठीक है. तो describable भी है और कभी-कभी indescribable भी है, right? For example, it has like, अगर हम एक एंगल से देखें तो इसमें पानी है, right? अगर हम suppose there is a glass of water, right? और उसमें पेन डालते हैं, right? तो बाहर से हमें वो अलग शेप में दिखाई देता है, बट like in the real side वो basically straight है, right? तो हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते. अगर एक एंगल से देखेंगे तो इट इज स्ट्रेट, राइट? बट अगर दूसरे एंगल से हम देखेंगे उसको तो इट इज लाइक डिफरेंट, ठीक है. तो डिस्क्राइबेबल भी है और इनडिस्क्राइबेबल भी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. नेक्स्ट, स्यात् नास्ति अवक्तव्य. स्यात् अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य. अब नास्ति it does not exist. Write down in some sense it does not exist and is indescribable. In some sense it does not exist but is indescribable. इस सिचुएशन में क्या कोई एग्जांपल देगा कोई? अनिकेत, कुछ भी एग्जांपल दे दो आज की सिचुएशन से, अपनी क्लास की. When something is existing but the situation is complex, this is what it means. तो ऐसी सिनेरियो कुछ है अभी? हाँ, it doesn't exist but the situation is complex, indescribable. तो कोई है तुम्हारे पास? Situation is very complex that you cannot make it understand. Exactly, illusionary things. Next, write down स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य. स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य. In front of it write down complex, multi-layered और conditional. अब मैंने तुम्हें क्यों लिखवाए हैं ये सब कुछ? Because whenever any political, ठीक है, essay will come, या फिर ethics में, या फिर even governance, ठीक है, you have to write down the example, ठीक है. तो तुम जब भी स्याद्वाद का एग्जांपल लिख सकते हो तो you can pick out the pointers from here.
कि ये सिचुएशन, सपोज कोई भी एग्जांपल ले रहे हो, लुकिंग एट द गवर्नमेंट सिचुएशन, तो यू कैन पुट आउट कि यहाँ पे स्यादवाद का ये एग्जांपल जा रहा है, राइट, एंड देयर इज दिस वन फॉर्म, वन पैटर्न, वन कंपैरिजन व्हिच इज स्यादस्य नास्ते वक्तव्य, द सिचुएशन मैचेस विद दिस सिनेरियो, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, राइट, इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल्स, ठीक है, लिंकिंग टू इट। एज आई सेड, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसी से पेपर यूनिक होता है, बट अगर तुम नहीं याद कर सकते तो यू कैन लीव इट, टोटली योर चॉइस। कंडीशनल। सो व्हाट जैनिज्म टीचेस अस कि जो रियलिटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, एंड आवर ह्यूमन परसेप्शन इज लिमिटेड, हम सारी ट्रूथ एक साथ नहीं देख सकते हैं, राइट, देन दिस डॉगमा लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो, as it could be seen in the reality as well, looking at the scenarios, today's scenarios. So this humility leads to harmony, ठीक है, ये सारी चीजें जैनिज्म सिखाता है। अब मैंने जैनिज्म और बुद्धा दोनों कंप्लीट करा दिया तुम्हें, ठीक है। अनदर होमवर्क ऑफ योर्स, प्लीज राइट डाउन, कल कराया था, रीड चारवाक। He is a philosopher. Carvaca. Sometimes it is written K also. ठीक है, चारवाक। कौन सा स्कूल ऑफ लर्निंग? He is a philosopher who talks about resting, living his life fully, ठीक है। He says do not worry about future, just eat, sleep and die, like this is the concept of his. बहुत छोटी सी थ्योरी है, like तीन ही वर्ड की थ्योरी है इसकी, but there is like few keywords in there which you can use in the examples, ठीक है, बाकी एग्जाम्स में भी, इसीलिए I'm going you through this चारवाक philosopher, ठीक है। हाँ, exactly. ओशो इज मोर कॉम्प्लेक्स। चारवाक बिल्कुल छोटी सी थ्योरी दी है, और तो चारवाक की हमारे पास कोई रियल टेक्स्ट नहीं है। चारवाक इज नोन थ्रू अस बाय जैनिज्म एंड बुद्धिज्म थ्योरी। जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया चारवाक को, बिल्कुल ऑपोजिट जो जैनिज्म और बुद्धिज्म बोलते हैं उसको ऑपोजिट चारवाक बोलते हैं, एंड इज द ओनली फिलोसोफर हु टॉक्स अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वो बोलते हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यही रियलिटी है, वी डू नॉट नो आफ्टर लाइफ, ठीक है, वी डू नॉट नो इफ दिस सोल एग्जिस्ट और नॉट, राइट, गॉड के बारे में वो बात नहीं करता है, ही इज काइंड ऑफ एथिस्ट, ठीक है, ही इज द ओनली फिलोसोफर हु इज क्रिटिसाइज्ड इन सो मेनी लेवल्स, जबकि इसकी फिलॉसफी एग्जैक्टली हमारे पास है भी नहीं, ना इसका कोई रिटन टेक्स्ट है ना कुछ है, हमें इसके बारे में पता चलता है थ्रू क्रिटिसिज्म बाय जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऑल दीस थ्योरीज, ठीक है। चल, यस सर। अनेकांतवाद बता दूं, समझ में नहीं आया, तुम बताओ। एक ही स्टोरी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, और सही नहीं हो, सब गलत नहीं हो, आज के टाइम पे एग्जांपल जैसे कुछ लोग अभी मानते हैं कि गवर्नमेंट, ध्रुव एक्सप्लेन। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता ध्रुव, तुम्हें लगता है कॉलेज है? क्यों नहीं आता? तो तुमने पूछा जब तुम्हें नहीं आता तो। एक चीज को देखने के कई पर्सपेक्टिव होते हैं, और हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो हम उसको ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। अभी कैसे समझ में आ गया तुम्हें? अभी तो तुम्हें नहीं आता। तुम बताओ, तो दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। तो बेसिकली अनेकांत वो है कि रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके बहुत ज्यादा साइड्स होते हैं, राइट। हम बेसिकली कोई भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, हम अपने साइड से उसको देखते हैं, वी एनालाइज इट, राइट। सो व्हाट अनेकांतवाद सेज दैट स्टॉप देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव आल्सो। जब तुम दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करोगे, एनालाइज करोगे, देन यू विल बी एबल टू मेक एफिशिएंट डिसीजंस, ठीक है। दिस इज व्हाट अनेकांतवाद थ्योरी इज। समझ में आया? चलो, write down please. Inculcating compassion, inculcating मतलब इम्प्लीमेंट करना,
ठीक है। कंपैशन, कंपैशन के बारे में हम कंपैशन के बारे में लिख रहे थे ना लास्ट। कंपैशन, हाँ, as a value in civil services. Compassion as a value in civil services. हाँ, इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम कंपैशन को इन सिविल सर्विसेज। जब तुम ग्राउंड पे जाओगे तो हाउ इट विल बी एफिशिएंट, हम कैसे इम्प्लीमेंट, इनकलकेटिंग कंपैशन एज वैल्यू इन सिविल सर्विसेज। हाँ, write down compassion is not just, compassion is not just, compassion is not just an inborn quality, is not just an inborn quality, comma, it can also be developed, it can also be developed through training, through training, exposure and continuous practice, exposure and continuous practice. In civil services, where officers handle people's life daily, comma, compassion must be nurtured, compassion must be nurtured as a professional value, must be nurtured as a professional value. Right, subheading of this, major ways in which this can be done. Subheading of this, huh? Nurture as professional value. Major ways in which this can be done. Major ways in which this can be done. Right, first, regular field visit. तो रेगुलर फील्ड विजिट्स अगर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन एक्चुअली यू नो गोइंग थ्रू दोज पीपल, है ना, उनको समझने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करिए इम्प्लीमेंट करने में, दैट्स मोर एफिशिएंट। इसीलिए रेगुलर फील्ड विजिट इज मस्ट। राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ इट, वन ऑफ द बेस्ट वेज, one of the best ways to cultivate compassion, one of the best ways to cultivate compassion is through direct interaction with people, is through direct interaction with people. When officers step out, when officers step out of their offices, step out of their offices and spend time in villages, when officers step out of their offices and spend time in villages, comma, slums, spend time in villages, comma, slums and disaster hit areas, comma, slums and disaster hit areas, and disaster hit areas. They see the real challenge, they see the real challenge of poverty, gender discrimination and health issues, and health issues.
discrimination and health issues. Write down second pointer, Bharat Darshan and cultural exposure. Bharat Darshan and cultural exposure. Officers undergo Bharat Darshan. Officers undergo Bharat Darshan during training. तो बेसिकली अगर हम भारत दर्शन पे जाते हैं तो वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ विद डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, और जितने हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो जिस भी स्टेट में आप लोग जाओगे, राइट, यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, इसीलिए दिस विल हेल्प यू इन द इम्पार्शियलिटी एज वेल, ठीक है. राइट डाउन भारत दर्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कॉमा, where they travel, where they officers undergo Bharat Darshan during training, comma, where they travel, where they travel, where they travel across India, where they travel across India to understand the country's diversity, where they travel across India to understand the country's diversity. This exposure builds respect. This exposure builds respect for different culture. This exposure builds respect for different culture, traditions and socio-economic realities. Traditions and socio-economic realities. Write down example of this. Socio-economic realities. Write down example. Northeast or Jammu and Kashmir. Northeast or Jammu and Kashmir often work better. Northeast or Jammu and Kashmir often work better with local communities. Often work better with local communities when they are trained to understand cultural sensitivities. When they are trained to understand cultural sensitivities. क्योंकि बेसिकली वो ट्राइबल कस्टम से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, लोकल गवर्नेंस से पहले से वाकिफ हो चुके होते हैं, राइट, सो दे कैन एफिशिएंटली वर्क देयर. नेक्स्ट, राइट डाउन थर्ड पॉइंटर, रोल प्ले एंड एम्पैथी ट्रेनिंग. Role play and empathy training. In bracket, write down NPA, Hyderabad. NPA, Hyderabad, and LBSNAA. LBSNAA. These are training academies. In front of it, write down training academies like the National Police Academy. The National Police Academy. In bracket, write down Hyderabad. And LBSNAA, in bracket, write down Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri, National Academy of Administration. Lal Bahadur Shastri, National Academy of Administration.
use role playing exercises. कौन सी academy? लाल बहादुर शास्त्री National Academy of Administration. National Academy of Administration. Use role playing exercises. Use role playing exercises to build empathy. To build empathy. Example, IPS trainees participate. IPS training participate in mock riot control drills. In mock riot control drills. Control drills. While they learn law enforcement. While they learn law enforcement. They are also trained to balance. They are also trained to balance. Also trained to balance. To balance it with human right concerns. Balance it with human right concerns. Fourth, Janta Darbar. Janta Darbar. In bracket, write down public interaction platforms. Public interaction platform. Write down in front of it. Direct citizen officer. Direct citizen officer. Interaction platforms. Direct citizen officer interaction platforms like Janta Darbars. Direct citizen officers interaction platforms like Janta Darbars. Like Janta Darbars are powerful. Janta Darbars are powerful tools. Janta Darbars are powerful tools for inculcating compassion. तो जनता दरबार में क्या होता है कि ऑफिसर्स बेसिकली फेस टू फेस आते हैं विद द पीपल्स रियल स्ट्रगल, राइट, एंड देन दे सॉल्व इट. Come face to face and they hear their real struggle and they solve it. Write down example. Nitish Kumar's Janta Darbar in Bihar. Nitish Kumar's Janta Darbar in Bihar. Janta Darbar in Bihar, where common citizens in Bihar, where common citizens could directly, where common citizens could directly present, where common citizens could directly present problems to the chief minister and officers. Present problems to the chief minister and officers. Last pointer of this, fifth, continuous sensitization programs. Sensitization programs. Sensitization programs. In front of it, write down compassion. Compassion cannot be a one-time lesson in training. Compassion cannot be one-time lesson in training. It has to be reinforced. One-time lesson in training. It has to be reinforced throughout an officer's career. तो बेसिकली जो भी ऊपर मेंशन किए गए हैं, क्या हुआ? Why are you so slow?
Compassion cannot be a one-time lesson in training. It has to be reinforced throughout an officer's career. So whatever the programs that has been mentioned above, right, you have to keep doing that. ठीक है, ताकि हम लोग भूलें ना, right? So write down regular refresher workshops, regular refresher workshops. नहीं, continue. Regular refresher workshops on gender sensitivity, workshops on gender sensitivity, comma, disability awareness, sensitivity, comma, disability awareness, comma, child rights, and ethical decision making, and ethical decision making. Ensure that compassion remains alive in governance. Ensure that compassion remains alive in governance. Write down example of it. Mission Karma Yogi, Mission Karma Yogi, comma, the government's training module, the government's training module focus on citizen centric administration and emotional intelligence. The aim is to create a bureaucracy that is not just efficient, but also empathetic and humane. Write down quote, humane. Write down quote to conclude. Compassion is not weakness. Now this you can use in essay. अगर तुम इन नोट से गो थ्रू कर लेते हो, then you don't need any other book. ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे जितने भी थिंकर्स के नाम लिखवा रही हो, द एग्जांपल्स आई एम मेकिंग यू राइट. पहले तो उनकी हिस्ट्री जान लो, जो भी एग्जांपल्स है करंट अफेयर्स है, राइट. एंड थिंकर्स की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लो ताकि तुम्हें लंबे टाइम के लिए याद रहे. ठीक है, राइट डाउन कंपैशन इज नॉट वीकनेस. Compassion is not weakness. It is strength. It is strength that binds society together, and allows governance to become truly humane. Compassion is not weakness. It is strength that binds society together and allows governance to become truly humane. What is objectivity? Okay. Write down objectivity in civil services. और इसमें किस किस को डालोगी तुम गीता में? हाँ, तो भगवत गीता में कैसे कोट करोगी? तो रेलेवेंस तो दिखाओ ना. एक्सप्लेन तो करो उसको. एक लाइन थोड़ी ना बोल दोगे कि भगवत गीता में लिखा. एक्सप्लेन तो करो थोड़ा सा.
मैम उसको थोड़ा एक्सप्लेन हाँ इसमें जो कंपैशन वाला आपने बोल लिखा है इसके आगे तो कंक्लूड बोला है क्या? हाँ write down objectivity in civil services. In front of it, write down taking decisions based on facts, decisions based on facts, evidence, and rational analysis, evidence and rational analysis rather than personal biases. Rational analysis rather than personal biases. Rather than personal biases, comma, emotions, personal biases, comma, emotions, or preconceived notions. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी क्या करती है, इंश्योर करती है कि डिसीजन जितने भी हमारे फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है, राइट? तो बिना ऑब्जेक्टिविटी के गवर्नेंस कभी भी काम नहीं कर सकती है, बायस रहेगी और हमेशा अनजस्ट रहेगी. गॉट इट? राइट डाउन. द ऑपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज सब्जेक्टिविटी. द ऑपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज सब्जेक्टिविटी. आदित्य, हाउ? ऑब्जेक्टिविटी क्या हुई? So when we talk about objectivity, तो पहले तो evidences, facts, reasonings, ठीक है? And we are thinking about everyone in here, ठीक है? पर्सनल कोई से नहीं है इसमें. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है सब्जेक्टिविटी. तो बेसिकली अपने वेलफेयर के लिए, ठीक है, नाउ दिस वेलफेयर डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है, रिलीजन्स आल्सो. जब भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दैट्स सब्जेक्टिविटी, राइट? सो हाउ वी शुड बी ऑब्जेक्टिव, राइट? वी शुड थिंक अबाउट द रीजनिंग, वी शुड थिंक अबाउट द फैक्ट्स एंड अबाउट द लॉजिकल, राइट? और उस हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि किससे ज्यादा फायदा होगा और कितने लोगों को उस चीज पे फायदा होगा, राइट? वी थिंक एंड एनालाइज मोर टुवर्ड्स द क्वांटिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी में. अंडरस्टूड? और सब्जेक्टिविटी में बेसिकली वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट आवर बेनिफिट्स, ठीक है? तो वहां से बायसनेस और अनजस्ट हमेशा आता है. राइट डाउन नेक्स्ट. आफ्टर सब्जेक्टिविटी, कॉमा, where decisions are influenced by personal likes, where decisions are influenced by personal likes, dislikes, or stereotypes. ओके, सो वन केस बहुत छोटा सा है, 1 मिनट का. सो ड्यूरिंग अ पेंडेमिक you are responsible for prioritizing who get the vaccine first. So government guidelines says कि frontline workers will get it, elderly people will get it, persons with any difficulties, right? So a local NGO brings a list of orphans living in a crowded shelter. So they are not included in the priority list, but their living conditions make them highly vulnerable. So you face a dilemma: should you strictly follow objective rules or use discretion to protect a high risk group ethically? तो जो हमने ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव उड़ाया उसके बेसिस पे यू हैव टू राइट द आंसर्स. तो मैं 4-5 लाइन का आंसर लिखना है एंड यू हैव 2 मिनट्स. During a pandemic, you are responsible for prioritizing who get the vaccine first. Government guidelines says frontline workers, second elderly, persons with difficulties. A local NGO brings a list of orphans living in a crowded shelter.
They are not included in the priority list, but their living conditions make them highly vulnerable. You face a dilemma. Should you strictly follow objective rules or use discretion to protect a high risk group ethically? So this is the dilemma: objectivity with compassion और तुम्हारे ethical morality की तरफ. You have to write the 4 words with one keyword and the type of dilemma that you are facing apart from what I have told you. Done? Done? बताओ. Although working inside the scope of instructions given by the government is the norm and objectively the better solution, but ignoring the NGO's plea to save the lives of high-risk individuals that can spread quickly in the pandemic is not the moral or ethical way of doing it. For how many classes you were absent? All except one. Next. Please. Stakeholders में आप जो सर जिसकी सिचुएशन है सर एनजीओ और प्रेसिडेंट or high risk group रखेंगे. In the scenario, decision making would be done on the objective criteria.
objectivity criteria where it would be ethical to also vaccinate the highly risk groups as well as under the vaccination drives, and considering to have a proper discussion with the NGO workers and how they can create a blueprint and manage to join them along with the list that the government has given already. So उनको भी उसके अंदर लाना है, like obviously as he mentioned कि as it is a spreadable disease, it can spread rapidly to the groups as well. So, Okay, lacks of keywords, but the content is fine. Shweta. Stakeholders in stakeholders that are frontline workers and orphans of the orphans prescribed by the NGOs and the public Citizens. citizens public. And dilemma is the follow the code of conduct versus fulfill situational demand. That's not the dilemma, but the situation. I'll make you write the dilemma. And from क्या करना है? Hmm. And the first priority should be provide vaccines to the frontline workers, like the medical staff, police officers, and the security generals, because according to the code of conduct, they are the ones who are ensuring the public welfare as well. And if their welfare is maintained, then in return they will ensure that the orphans or the needy people will get the vaccines as well. Okay. Online students, please unmute yourself. Read. The stakeholders with the NGO जो Apsara और elderly people frontline workers और तुमने कितने स्टेकहोल्डर्स लिखे? 3. Okay. और dilemma of compassion versus empathy Hmm. और Okay. I'll follow the government guidelines and will give the vaccine to frontline workers who are vaccinated, because the compassion towards job, it is the first thing, compassion towards my job. और उसके बाद हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल जाएगा वैक्सीन, तो वो खुद ही जो नीडी है उनको दे देंगे. और एल्डर्स, यही एथिक्स हम लोग को सिखाते हैं कि एल्डर्स को पहले ट्रीट करना चाहिए. Okay. Online students, anyone? इसका आंसर लिख लो so that you can have the idea कि लिखना कैसे है. ठीक है. First of all, मैं कुछ values conflicts बता देती हूँ, वो लिख लेते हैं. Write down heading values conflict. Values conflict. First is objectivity versus compassion. Objectivity versus compassion. अब objectivity क्या यहाँ पे डिमांड कर रही है कि strict official orders जो भी मिला है उन्हें priority दिया जाए, right? And then compassion highlights that vulnerability of the orphans, ठीक है, कि उनके लिए आपको काम करे, ठीक है, that's compassion. Second, rule of law versus moral responsibility. Rule of law versus moral responsibility. तो जो भी गाइडलाइंस दी गई है, somewhere that is binding the administrator, right? और उसके बाद this humanity requires what? कि प्रोटेक्शन दी जाए जो भी highly exposed gap है बीच में, right? So rule of law versus moral responsibility. Third is equity versus equality. Moral responsibility क्या है यहाँ पे? कि हाँ एग्जैक्टली कि जो भी हाईली एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है, उनकी हेल्प करे, दैट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो सही है या गलत वाली बात नहीं है. देयर आर 2 कीवर्ड्स दैट आई केम अप विद और उसमें वी आर पुटिंग द सिचुएशन. इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी. इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी. सो ट्रीटिंग एवरीवन द सेम इज इक्वालिटी. मतलब जितनी भी लिस्ट है उसके हिसाब से यू हैव टू फॉर्मेट. इक्विटी मतलब एक्नॉलेज करना कि ऑर्फन्स जो है उनको हायर रिस्क मिल सकता है, राइट? सो यू आर प्रायोरिटाइजिंग देम, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, ठीक है. नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. अब अगर तुम रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे तो दिस विल रेज द क्वेश्चंस ऑफ द बायसनेस, राइट? बट अगर तुम वही रैशनल और ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे, राइट, सो दिस कैन एनहेंस द ट्रस्ट, ठीक है. तो ये डिफरेंस आगे समझ में. अब
discretion. Next, write down what is the ethical way to balance objectivity with compassion. What is the ethical way to balance objectivity with compassion? Ethical way to balance objectivity with compassion. जब हम एथिकल अप्रोच की बात करते हैं तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? एविडेंस बेस की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ और जो जस्टिफाइड हो, राइट? सो फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज की वल्नरेबिलिटी सिचुएशन क्या है, राइट? कि रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं, राइट? सो दिस शुड बी लाइक फर्स्ट स्टेप. सो राइट डाउन रिकॉग्नाइज recognize vulnerability, recognize vulnerability as a legitimate risk factor, as a legitimate risk factor. Although guidelines में mention है कि आपको specific categories को choose करना है, right? But because the situation is so vulnerable, so obviously you'll go with the dense condition. ठीक है? जो भी high risk में आएंगे. हाँ. Next, document your reasoning. Second, document your reasoning. तुम कोई भी decision ले रहे हो, ठीक है? Whatever decision you are choosing, right? You have to mention in the answer कि you are going to explain to the administrator. ठीक है? You are going to justify it. Write down, document your reasoning. Third, ensure no political or personal preference. Ensure no political or personal preference. No political or personal preference. अब यहाँ पे तुम क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, तो राइट डाउन द कीवर्ड्स. ट्रांसपेरेंसी, मोरालिटी, कंपैशन, बस इतना ही ठीक है इसमें. ठीक है, डिलेमा समझ आए? तो अब जितने भी मैंने इसमें डिलेमास में लिखा है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग देम, क्योंकि यही रिपीटेड डिलेमास होंगे. अभी और भी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, वे विल बी लर्निंग मोर, बट जितने हम केस स्टडीज रोज करते जाएंगे, यू विल बी एबल टू पुट दीज कीवर्ड्स एंड डिलेमास अकॉर्डिंगली. ठीक है, खुद से पुट करना सीख जाओगे. ओके, देयर इज अनदर केस स्टडी. हाँ हाँ बिल्कुल, चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं. You are a district level police officer known for strict law enforcement. Our ruling party MLA requests you to transfer a particular police inspector who conduct raids on business owned by the MLA supporters. ठीक है? Should I repeat it? The MLAs tell you privately, you either transfer him or I will get you transferred. There is no evidence of misconduct by the inspector. The MLA's demand is purely political. The inspector is an honest officer, but your refusal may trigger a vindictive transfer affecting your family, especially because your aged parents live with you. Okay. So the question is, what ethical dilemmas did you face here? लिख dilemmas लिखो. Write at least 3 dilemmas.
डन। क्या लिखा? Compassion versus empathy. कंपैशन कहाँ पे, कौन सी पोजीशन में? जब लाइक उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे या लाइक पहले हमारी रिस्पांसिबिलिटी का सोचेगा जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें सॉरी कहेंगे जब उसने कुछ गलत नहीं करा है और एम्पैथी एम्पैथी लाइक हमारे जो फैमिली पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। नो। सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी कैसे? पर्सनल चीज पे इंटरेस्ट है कि अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसको ट्रांसफर करते हैं। सब्जेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम whom? सब्जेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम whom? मैम खुद की अगर वो एल्डरली पर्सन को देखते हैं या कुछ अगर उसने नहीं ट्रांसफर कर दिया तो वो शिफ्ट करना होता है। ओके, और ऑब्जेक्टिविटी इज? ऑब्जेक्टिविटी इज कि वो अपनी पर्सनल चीज को छोड़ के उसको बोले कि करप्शन वगैरह नहीं हो। या फिर उल्टा कर देते हैं कि एमएलए को हम सब्जेक्टिविटी में डाल देते हैं, राइट, एंड ऑब्जेक्टिविटी में वी कैन पुट द ऑफिसर हु इज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर। कैन वी पुट दिस इन दिस सिनेरियो? श्वेता, इट्स दिस मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट। कैसे पर्सनल बेनिफिट? ये कि वो अपना ट्रांसफर हो सकता है। ओके, इंटीग्रिटी है कि दूसरे के साथ गलत ना करे, उसके हाथ में चॉइस है कि वो उसको ट्रांसफर करेगा या ना करेगा। नेक्स्ट। Fairness versus love. Fairness towards the officer and towards our own job. ठीक है, whenever you are writing the dilemmas you have to consider the both the situations, ठीक है, एमएलए की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी, ठीक है। डिलेमा हमेशा दो प्रॉब्लम्स के बीच में होता है, खुद की ही प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है कि बीइंग ऑफिसर मेरे में ये डिलेमा हो रहा है, नहीं, यू हैव टू फाइंड द डिलेमा उस साइड से भी और इस साइड से भी। so there are few dilemmas, please write down. Write down rule of law versus political pressure. Rule of law versus political pressure. क्या हो गया? Second, professional ethics versus emotional obligation. Professional ethics versus emotional obligation. तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पब्लिक, ठीक है, एंड द पुलिस फोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर इमोशनल ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स हु डिपेंड्स ऑन योर स्टेबल पोस्टिंग, राइट। तो ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। राइट डाउन थर्ड, impartiality versus fear of victimization. Impartiality versus fear of victimization. अगर तुम स्टैंड लोगे तो यू विल बी द टारगेट फॉर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर, है ना। हाँ हाँ, फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन ऐसा होगा कि बेसिकली अगर हम नहीं उस पर स्टैंड ले रहे हैं, पॉलिटिकली हम लोग एमएलए की बात नहीं सुन रहे हैं, राइट, तो यू विल बी विक्टिम ऑफ द करप्शन, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा वहां से, ठीक है, वो सारी चीजें। राइट डाउन ऑन द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सबऑर्डिनेट, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सबऑर्डिनेट्स वर्सेस रिस्क टू सेल्फ। सब हो गया? हाँ, ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सबऑर्डिनेट्स वर्सेस रिस्क टू सेल्फ। नहीं रहा ये। कलीग, हाँ हाँ, दैट्स हाँ impartiality. Write down public trust versus administrative the convenience. next part of it. Public trust versus Maturity stage administrative convenience. we have done wide valley, meander, floodplains, point bars, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे middle reaches of Godavari, middle Public reaches trust versus administrative of convenience. Godavari, middle reaches जब गोदावरी का अच्छा, अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं इंस्पेक्टर का एज पर द एमएलए डिमांड तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस? पहले तो प्रोज देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो होगा कि हमारा middle ट्रांसफर reaches रुक जाएगा, ठीक of है। Godavari, दूसरा, हमारी फैमिली की नर्मदा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। middle reaches of यस, of Godavari, मैम समिश्रा मैम की वॉइस आ रही है। नर्मदा and Kaveri कैन यू कॉल समवन फ्रॉम and द Kaveri. Next point, टेक रूम में से। old stage.
final phase near base level. What stage? Final phase near base level. Final phase near ठीक है, final phase near base level. Write down. Deposition class dominates. किसकी है साहब? यहाँ पे क्या dominate कर रहे हैं? Deposition. Deposition dominates. फिर लिखेंगे ऑक्सबो लेक्स, कॉमा डेल्टास. अभी तक कुछ भी टफ लग रहा है? ऑक्सबो लेक्स, समिश्रा मैम की आवाज आ रही है बच्चों में. डेल्टास. तो फैमिली स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और इमीडिएटली जो levies, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है एमएलए के साथ में दैट कुड बी ऐसा अवॉइडेड, हमारे मेंशन है रिलेशन वहाँ एमएलए पे. के साथ कहाँ पे? मेंटेन रहेंगे, राइट. कौन क्या क्या हो आपकी गया? एनसीईआरटी में लिवीज, करप्शन इनकरेज करता है, फिर उसके Comma. बाद दूसरा इंटीग्रिटी गुड, पब्लिक ट्रस्ट जो होगा राइट वो डाउन खत्म हो एग्जांपल में जाएगा, लोअर right? गंगा फिर उसके ब्रह्मपुत्र डेल्टा. अब क्वेश्चन क्या आएगा? गुड. अगर हम ऑप्शन 2 लेते हैं कि हम एमएलए की रिक्वेस्ट को मना कर दें एंड प्रोटेक्ट द इंस्पेक्टर, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट, एंड इट विल प्रोज देख रहे हैं हम लोग, ये स्टॉप करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस. ओके, यस. कॉन्स में क्या होगा? यूटिलिटेरियन में अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे? यूटिलिटेरियनिज्म वाला कंसेप्ट क्या था? इसमें मैक्सिमम बेनिफिट में क्या होगा? उसमें सिर्फ उस फैक्टर का ट्रांसफर होगा. अगर हम पॉलिटिशियन के खिलाफ जाएंगे तो इसमें हमारी पूरी फैमिली वो मिक्स कर देंगे. So which one will you choose according to utilitarianism method? Akriti, is the voice coming? Akriti. Okay. चलो, for this will end. और उसके बाद कल से शुरू करेंगे थिंकर्स. हाँ, तुम लिखे. बाद में दे देना क्लास के. ध्रुव के नहीं स्टेप आउट. नहीं, ठीक था. What's the issue with you?